फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज संतोष सर। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स IPO 02 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड यू नो फ्रेंड्स, लाइक एमकॉम में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट इज यू नो द मोर यू राइट द मोर यू विल गेट। दैट मीन्स आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, उतना ही आपको फायदा होने वाला है, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। So it depends on your writing skill. And this particular chapter, marketing management, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एंड मोर और लेस हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वी नो बिकॉज क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एंड बहुत सारे आपको ऐसे कॉमन टॉपिक्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये बहुत ही हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को एक्सपैंड करने के लिए। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जरूर रिवाइज करने चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मार्केटिंग से। मार्केटिंग में आपको करना है लाइक व्हाट इज मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, व्हाई द कंपनीज और फर्म्स स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड उसके बाद में आती है बात फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग, जैसे प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सेलिंग, मार्केटिंग दोनों एक ही है। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइक दैट, इवन लाइक आई टेल यू, अगर कोई पॉइंट आपको अगर याद नहीं है, आप भूल जाए, तो आप कोई भी दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट को यहाँ पे आप इंसर्ट करके आंसर का लेंथ को लंबा कर सकते हैं, राइट। तो ये एक फैसिलिटी। तो मार्केटिंग में आपको ये सारी चीजें करनी है, इंपॉर्टेंस, फिलोसॉफीज, एंड देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। इसको भी हम लोगों ने बहुत बार किया है। सेलिंग बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, स्मॉल कॉन्सेप्ट, नैरो कॉन्सेप्ट, एंड मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। एंड मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन एंड इवन लाइक इट कंटिन्यूज आफ्टर द सेलिंग ऑफ गुड्स। तो मार्केटिंग प्रोडक्शन के बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है और गुड्स को बेचने के बाद भी मार्केटिंग के फंक्शंस दे ऑल कंटिन्यू। तो ये आपको ये टॉपिक जरूर करना है, बढ़िया से रिवाइज करना है। द नेक्स्ट वन इज दिस वन, व्हाई फर्म्स गो इंटरनेशनल। दैट मींस व्हाई द कंपनीज ट्राई टू सेल देयर गुड्स इन द फॉरेन मार्केट्स, इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ में शेयर किए हैं बहुत बार। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है, सो इसका वेटेज अच्छा खासा है। यू मस्ट प्रिपेयर दिस। देन कम्स द प्रोसेसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। हाउ, लाइक व्हाई, लाइक व्हाट आर द स्टेप्स और स्टेजेस दैट हैज टू बी फॉलोड बाय अ कंपनी while entering into an international or foreign market। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन इसके बाद में बात करते हैं EPRG फ्रेमवर्क। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि आपको शॉर्ट नोट्स मिल सकता है एंड इवन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी EPRG फ्रेमवर्क आता है एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से रिवाइज करें। 4 पॉइंट्स हैं EPRG, तो चारों को अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसके बारे में लेंथ से देखेंगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एज आई टोल्ड यू लाइक इन द प्रीवियस वीडियो कि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट अगेन माइक्रो मैक्रो दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड देन अगेन माइक्रो के कंपोनेंट्स, मैक्रो के कंपोनेंट्स, एंड व्हाई दिस एनवायरमेंटल स्टडी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग, व्हाई इट इज डन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट लर्न अबाउट व्हाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट सेगमेंटेशन, its main objectives and the different types of segmentation. Segmentation means dividing the market into small segments, and
It's a very common practice for the companies. In fact, for large companies, they often do this strategy to sell their goods. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेगमेंटेशन. तो सेगमेंटेशन के साथ में अगेन लाइक दिस आर ऑल ये जुड़ा हुआ है टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. तो समटाइम्स सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड. और यू कैन गेट क्वेश्चंस के अलग अलग करके इसको कॉन्सेप्ट को डिफाइन करें, एग्जांपल्स दें लाइक दैट. एंड while you will study market targeting, you should study about what are the strategies of market targeting. Then what are the different methods by which product positioning is done. तो ये भी मैंने previous videos में आपके साथ में explain किया है, very important one. The next one, the difference between high tech positioning and high touch positioning. This is a very common question. Quite a lot of times it has come in the exams. So, this question also you can't skip. Then this one, this is one of the most important questions. Modes of entry into foreign market. In fact, one of the, the must question from IPO 02. Like what are the ways by which a company enters into foreign market. So basically, मैंने यहाँ पे short में लिखा है. There are 5 steps. One is direct exporting, second one franchising, then joint venture, alliances, that is strategic alliances, and foreign direct investment. So these are the 5 sources, and you should read about their merits, demerits also. Right. Okay, the next one, again a very important concept, PLC, that is product life cycle. Very common question. ये क्वेश्चन MCO 06 में भी है. ठीक है. तो कोई भी एक प्रोडक्ट के कैसे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज, देन इट मूव्स फॉरवर्ड इन अ ग्रोइंग स्टेज, देन कम्स मैच्योरिटी, देन डिक्लाइंस. सो लाइक दिस देयर आर 4 स्टेजेस एंड उसको आपको डिफाइन करना है. मेक ए फ्लो चार्ट. आप जितना फ्लो चार्ट बनाएंगे उतना ही अच्छा है. दैट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर्स माइंड. So do draw the flow charts wherever it is possible. Okay. The next one, this one, steps required in developing a new product. Whenever a company introduces a new product in the market, so what are the different stages through which the product goes into the market? ये भी बहुत important है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है. While a new product is launched, so what steps or what stages or what processes, understanding the question is important. If you don't understand the question, then it's very difficult to write the answers. So try to understand the question and then write your answers. Okay, the next one is branding. Now what is branding? What are the benefits or advantages of branding? Now this one is the most important. The different strategies, branding strategies. Now this question is very common, बहुत बार एग्जाम्स में आता है. एंड दिस ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ में शेयर किए हैं. तो इसको बिल्कुल पढ़ना है आपको. देन द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग. इंडिविजुअल ब्रांडिंग, दैट इज ब्रांडिंग फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग इज अ ब्रांडिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट. राइट. ओके. द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम पैकेजिंग. Now, what is packaging? What are the benefits of packaging? And what are the factors that affect packaging? Because packaging is a very important thing in international trade, because it protects the goods from from theft or any such type of risk in handling and while loading, unloading, and also like it should be very attractive. So packaging plays a very important role. And the next one is pricing a product. This is also a very important question, like how you will price the product. Different methods are there. I think 4 to 5 methods are there. Cost plus, price scheming, market penetration. तो ऐसे बहुत सारे methods हैं जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग एंड इसकी स्ट्रैटेजीज.
Yeah, like what, like when a company uh, fixes the price of its product, what are the strategies that it can follow? तो ये भी बहुत important question है. And from here again, like what are the factors that can affect the pricing of a product? Okay, friends. The next question is IMC. IMC is international marketing communication, and this one is also a very important one. The different tools of marketing communication, like different tools like sales promotions, publicity, advertisements, like that, and its different processes. How this communication between the consumers and the company takes place. So those processes, very important one. The next one is standardization and adaptation. And what are the factors that affect standardization and adaptation? Standardization, as we know, like bringing a uniformity in the product line, and adaptation is like how the product adapts in the market with the competitors, right? So this topic is also very important, and sometimes we get a difference between standardization and adaptation. Okay. The next one is personal selling. And what are the different steps involved in personal selling? We have studied this concept in class 11 and 12 also, in college level also. So personal selling is not an unknown concept. We can write a lot about this. Okay, basically, it is all about salesmanship and sales management in simple words. So this technique definitely is one of the oldest technique in marketing management. Right. The next one is publicity. Publicity and its merits and demerits, and how it differs from personal selling. Publicity is different. I have also explained this topic in detail in my previous videos. Do watch those videos before going to the exams. So, okay, the next one is issues in the marketing of services. Now, this service sector is, I was also telling you in the previous video that this service sector is one of the, the most emerging sector in India. And you can expect a lot of questions on this. And, what are the opportunities that we have in India for services? We know that, outsourcing job, like India is the pioneer in that. India is quite famous for this, and in fact 60 to 70% of the GDP of India is obtained from tertiary sectors, service sectors. So you might get a question from this, why this marketing of services is an issue or challenge for a company, because it is not a product, it is an intangible asset, and therefore we find it very difficult to sell in the market. Selling a product is easy, but selling a service is quite difficult. Okay, the next one. This one also a common topic in all the IPOs guts, and it is on services, right? And the next one, issues and unethical practices in foreign trade. You might get question from this because there are a lot of companies, especially TNCs and MNCs, they are involved in unethical practices, unfair practices. They try to avoid competition, they pollute the environment, and even they destroy the tradition, customs, and culture of a nation. So like that, there are many points which you can generate from your mind. The next one is this one, very, very important one. Impact of IT on marketing. Information technology. As we know that technology is changing, and it is changing very rapidly. And the companies, they are very keen in adopting new technology. So when we talk about marketing, information technology plays a very, very important role. The introduction of e-commerce, internet marketing, they are all result of this technology, right? The next one is MIS and MR. This is marketing information system, and this is marketing research. You might get a difference between these two. Like basically, it is on research, a research topic,
and every company does a marketing research before introducing a new product, or even they are always continuously engaged in this process, because it is always better to have a good idea and information about the market where the company is going to sell its product. So a very important and a very practical topic as far as marketing management is concerned. Right. The next one is sampling. Sampling, basically, you will study more about this in the second year, that is in MCO 03. And there are different processes of sampling, the different methods like random sampling, non-random sampling. Again, random sampling are divided into different types. Non-random sampling are also divided into different types. A big concept. So you should study about this. You might get a short note on say random sampling or stratified sampling, like that. And the last one is reporting, and what are the characteristics of a good report. So friends, these are few important questions and topics that you should consider, you must learn, and the rest is on God. And I think you might get questions from this, so many questions that I told you in this video. So a very best of luck for the exams. Thank you very much for watching my video.